Norm standards and basic design concepts. 2 questions came from this. Let's see. In case of residential apartments, अब हमारे साथ architecture specific भी आ रहा है कुछ questions, ठीक है? In case of residential apartments, the effective floor area available for use within an apartment is known as. तो effective floor area मतलब actual floor area जो हम use कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम सिर्फ वही एरिया यूज करते हैं जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हैं, राइट? इट्स अ क्वेश्चन दैट हैज आल्सो कम अप इन गेट एग्जाम, ठीक है? तो कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आपका कारपेट बिछ सकता है, ठीक है? एंड दैट इज द इफेक्टिव फ्लोर एरिया, वही आप यूज कर सकते हो। तो इफेक्टिव का मतलब जितना आप यूज कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया में आपका वॉल्स का भी ऐड जाता है एंड सुपर बिल्टअप एरिया में यू आल्सो गेट कॉमन एरियाज एडेड, तो यहाँ ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है? So that's all. Now let's move to the next question. You can read through this and see what each of these mean. Which of the following is part of studio apartment? Studio apartment concept पता है? It's a single room dwelling unit where you have all the services जो भी आपको चाहिए होता है. So it's a multi-purpose space that you have. You don't have a single bedroom में अलग से rooms नहीं होती. Studio apartment has a multi-purpose space which has a kitchen, छोटा सा kitchen होगा, all the things are there together. Okay? So this. So your answer is multi-purpose space. Let's move on to the next question. Building services, drainage and sanitation, HVAC, electrical and acoustics. Okay. Okay. Now this is a very common question. Gate में भी आता है, gate में इसको calculate करने भी आता है, but this is a very common question. The persistence of sound in a particular space after original sound is produced. तो sound को diffuse होने में और sound एक बार produce होने के बाद कितनी देर तक वो persist करता है, that is given by that is called actually reverberation. ठीक है? तो reverberation इसका आंसर है हमारा. बाकी ऑप्शंस आपको अगर डेफिनेशन पता तो you would be able to guess this. ठीक है? I think that is all for this. Next, move to the next question. Let's move on. Reverberation का एक बार आप लोग फॉर्मूला भी देख लेना, because sometimes that is also asked. फॉर्मूला के ऑप्शंस ये भी आया हुआ है कभी-कभी. The maximum permissible level of noise in residential area during daytime in decibels is. ठीक है? तो यहाँ पे आपका मिडिल टू काम नहीं कर रहा है, बट इफ यू लुक एट इट, आपका लोअर लिमिट को आप अगर हटा दो और हायर लिमिट को हटा दो, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है. ठीक है? तो लोअर नॉर्मली हमें अगर वो डे टाइम पूछ रहे हैं, यू नो दैट कि डे टाइम का जो लेवल होता है इट्स स्लाइटली मोर देन नाइट टाइम. नाइट टाइम में हमें मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज लेवल कम होता है. ठीक है? तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, रेजिडेंशियल के लिए 55 इज फॉर डे टाइम, 45 इज फॉर नाइट टाइम. सिमिलरली कमर्शियल के लिए 65 एंड 55. सो नॉर्मली लोएस्ट एंड हाईएस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे 55 हमारा आंसर है. ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The best location for laying the mean sewer line on a flat land is. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि it's a gate question, 2012. Okay, that's why I'm not aware of this paper or like this question, but ठीक है, ये question आया हुआ है पहले भी. मेन सीवर लाइन ऑन अ फ्लैट लैंड. अब आपका लैंड अगर फ्लैट है तो उस केस में कहाँ होता है आपका जो सीवर लाइन है? नॉर्मली हम अंडर द रोड दे देते हैं उस केस में. ठीक है? ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल. अगर बाकी सारे ऑप्शंस इफ यू जस्ट हैव अ लुक, आपको पता लग जाएगा कि अंडर साइड वॉक, अंडर सेंट्रल वर्ज एंड अंडर द ओपन स्पेस अलोंग द साइड वॉक इज नॉट लॉजिकली करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sudden stoppage in the flow of water in a closed conduit result in the phenomenon called. Okay, so this is also a gate repeated question. इसमें क्या होता है कि आप अगर अचानक से किसी हाई प्रेशर में अगर पाइप में पानी जा रहा है, अगर आप उसको अचानक से रोकना चाहते हो तो एक वाटर हैमर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ. ओके, दैट अगर आप वो अप्लाई करते हो तो सडन ब्रेक लग जाता है पानी के फ्लो में, और कभी-कभी डायरेक्शंस भी अब्रप्टली चेंज कर सकते हैं हम इसको वाटर हैमर यूज करके. ठीक है? तो इट इज यूज्ड टू abruptly stop the flow of water or changing direction of the flow of water. ठीक है? Now let's that is the answer. और यहाँ पे आपको phenomenon result है ना. Again other options, stack pressure, hydraulic, again you have to be, इसमें आपको बहुत आपको पता होगा तब you can attempt this, otherwise maybe can skip. The correct sequence of activities in solid waste management is. Okay, this is also a gate question. ठीक है? ये आया हुआ क्वेश्चन गेट में.
रिसेंट पेपर में आया है किसी, एंड कलेक्ट। तो इसमें इफ यू जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, यहाँ पे भी रिपीटेशन देख सकते हो, सेग्रीगेशन 2 बार रिपीट हो रहा है। एंड एनीवेज यू नो कि सेग्रीगेशन से स्टार्ट होती है चीजें, व्हेन यू सेग्रीगेट द वेस्ट, देन यू कलेक्ट इट, देन यू टेक इट फॉर, तब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लास्ट में ट्रीटमेंट होता है। तो दिस 3 जो है ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन से भी आप इसको गेस कर सकते हो, ठीक है। The principle of solid waste management, this I think we don't need an explanation to this. Reduce, reuse, recycle. 3 Ds or 4 Ds bhi hote kabhi, which is the fourth one is rethink, which is because the Department of Recycling and Resource Management will be if that comes. ठीक है, वैसे normally we have these 3 Rs. Repetition से आप इसको भी देख सकते हो, reduce is repeating twice. Reuse भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है. So if something has so much common, तो chances होते हैं confuse करने के लिए दिया होता है, ठीक है। So it's also a gate question. आप इस ये क्वेश्चन आपको दिमाग में, this I think you should be able to do. ठीक है, रिपीटेशन से आप इसको निकाल सकते हो, साइकिल भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सिटी एंड प्लानर, सिटी एंड प्लानर में 2 ही क्वेश्चन आए थे, बट इट्स समथिंग वेयर यू कैन स्कोर, क्योंकि सिटी एंड प्लानर में लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। एंड हर बार आया है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज अपीयर्ड इन ऑल 15, 11 और 18 के पेपर। कैपिटल टाउन ऑफ गांधीनगर वाज डिजाइन बाय, ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, HK मेवाड़ा इज द आंसर। बाकी आपको देख के पता चल जाएगा, बीबी दोषी नहीं है, दीपा कुशर का आपको पता है ऑलरेडी, चंडीगढ़ है। सो नॉर्मन फॉस्टर इज आल्सो नॉट, इंडियन टाउन्स के लिए कुछ नहीं है उनका रोल, ठीक है। तो HK मेवाड़ा इज द आंसर। समटाइम्स यू आल्सो गेट दिस ऑप्शन प्रकाश M आमटे, तो ये भी आप देख सकते हो, कभी कभी वो प्रकाश M आमटे भी आपके ऑप्शन में रहता है, एंड दैट इज आल्सो, इफ दिस इज नॉट देयर तो ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। Okay, now let's move to the next question. Which planned city is a union territory administered by the union government? अगर आपको सिर्फ पता है कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, which is a very basic knowledge, तो आप उससे आप आंसर इजीली बता सकते हो, ठीक है। चंडीगढ़, because all others are not union territories. Next question. Which planned city is a sorry. Okay, Chandigarh plan. Okay, I just want to add here that we have Chandigarh was planned by French architect Le Corbusier, and ये V7 का concept जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ठीक है। That is, this is the hierarchy, ठीक है। कभी कभी hierarchy से भी question आ जाता है, ठीक है। This is important. Now let's move to transport planning. Okay, transport planning के questions भी हर बार आए हैं, and we expect this time also it will be coming, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो, एंड देन यू कैन आल्सो रेफर बैक। ओके, व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेड सेपरेटर। ग्रेड सेपरेटर हम किसको बोलते हैं? ग्रेड हम बेसिकली एक रोड मान लो, स्ट्रीट को बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेड अगर एक लेवल पे अगर रोड है, सो इट विल बी एट द सेम ग्रेड, विल बी सेइंग दैट ये एट सेम ग्रेड है, एट ग्रेड है, ठीक है। ग्रेड सेपरेटर्स ओनली व्हेन देयर इज एन एलिवेशन डिफरेंस, जो कि हम ट्रैफिक के फ्लो को इंटरप्ट नहीं होता होगा। मान लो कहीं पे फ्लाईओवर इंटरसेक्शन में बन रहा है, एंड द अदर वन इज टेकिंग अप अ रैंप, एक रैंप से अगर आप ऊपर से फ्लाईओवर चढ़ जा रहे हो, तो देन इट इज अ ग्रेड सेपरेटर, ताकि जो ट्रैफिक है वो अलग अलग ग्रेड पे चले जाए। ओके, सो इन दिस केस इफ यू जस्ट लुक कि यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस कहाँ मिल रहा है हमें, जंक्शन विद ट्रैफिक सिग्नल्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो तो सेम, सारे कुछ सेम लेवल पे ही होता है। राउंड अबाउट में भी सब कुछ सेम लेवल पे होता है। रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो वो रोड और रेल में बस एक लाइन का डिफरेंस होता है, इट इज नॉट एक्चुअली लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ओवरब्रिज अबव रेलवे लाइन इज एक्चुअली अ ग्रेड सेपरेटर, वेयर रेलवे लाइन इज पासिंग थ्रू बिलो, ठीक है, अलग डायरेक्शन में जा रही है, एंड बोथ आर एबल टू मूव विदाउट एनी हिंड्रेंस। ट्रैफिक फ्लो में हमें हिंड्रेंस नहीं मिल रहा, बिकॉज इट इज ग्रेड सेपरेटेड, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in a traffic survey the term internal trip refers to, ठीक है। इंटरनल ट्रिप थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का कंसेप्ट है, बट आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि इंटरनल बोल रहे हैं तो इट वुड बी विद इन द सर्वे एरिया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आर नॉट नॉन मोटराइज्ड ट्रिप, तो हम इंटरनल ट्रिप क्यों बोलेंगे? डजंट मेक सेंस, ट्रिप यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट नॉर्मली
whenever we have done a survey, or maybe मान लो survey area का boundary है, तो if you have an origin here and destination here, it's called an internal trip. हम अंदर अंदर में ही जा रहे हैं. If you go from origin to a destination here, it's an internal to external trip. Origin यहाँ destination अंदर, तो external to internal. और अगर आपके origin destination दोनों बाहर होते हैं, then you call it an external trip, okay? Or you can even go like this, but इस केस में भी आपका ये एक्सटर्नल ट्रिप है क्योंकि आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट बाहर है, ओके, सर्वे एरिया के बाहर है. इट्स एन एक्सटर्नल ट्रिप. तो ये कंसेप्ट रहता है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रिप्स का. ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस इफ यू नो व्हाट इंटरनल ट्रिप इज. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज रिक्वायर्ड टू प्लान फॉर द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, जब भी हम ट्रैफिक के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम लेवल पे करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेरी क्लियरली, एक्सप्लिसिटली. तो आप इस चीज को एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, मैक्सिमम और थ्रेशोल्ड लेवल को आप यूज कर सकते हो. एंड यू कैन से कि मैक्सिमम लेवल पे अगर आपको प्लानिंग करनी है, एवरेज कैन नेवर बी अ मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज वाली चीजें नहीं होंगी. ऑफ पीक टाइम में आपका ट्रैफिक कम होता है. So if you are planning for maximum threshold level of traffic, तो peak time में ही मिलेगा वो आपको. तो peak time traffic survey और peak hour traffic survey, which what we do. ठीक है, इस टाइम पे आपका सबसे highest level पे होता है traffic. Okay, let's move to the next question. Desire lines are associated with. Okay, desire lines अगर आपको पता है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का concept है, where we basically make a diagram जहाँ पे बहुत सारे points के बीच में ट्रिप इंटरचेंज हम शो करते हैं. जैसे यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ गया कोई ट्रिप, सो वी रिप्रेजेंट इट थ्रू लाइंस. एंड इनकी डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जितना थिकर लाइन होता है, इट रिप्रेजेंट्स मोर ट्रिप्स इन फ्रॉम दैट ओरिजिन टू डेस्टिनेशन. उनके बीच में, ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन है. ठीक है, तो इट्स अ डिजायर लाइन डायग्राम, ऐसा कुछ होता है. इसमें हमें ओरिजिन डेस्टिनेशन के एनालिसिस से निकलता है. अगर हमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स पता है तो वी कैन क्रिएट दिस डिजायर लाइन डायग्राम. ठीक है, so it's not a part of landscape planning or financial planning or economic planning. अगर आपको टर्म पता होगा कि ये ट्रांसपोर्ट का है, तभी आप इसको इजीली कर पाओगे. ओके, now let's move to the next question. Concept of TOD refers to. ठीक है, TOD का कंसेप्ट क्या है? TOD का कंसेप्ट है कि when you have a mass transit corridor, जैसे मेट्रो हुआ या कोई रेलवे का लाइन हुआ, उसके अराउंड metro हुआ, railway line हुआ, ISBT हुआ, and these are the TOD norms are given by the government. What TOD norms will give us? They will give us the extra FAR to construct. The government gives the extra FAR with extra restrictions. So suppose in an area there is a certain FAR limited, like 200 FAR is limited to construct. By using the TOD norms, that builder or that association will get an extra FAR. This extra FAR they need to develop for the mixed use high density development, which includes, like in Delhi there is 35% residential, 10% institutional, and 5% is commercial area. They have to be provided. Okay, so everybody does not use this TOD norms, but this is if suppose any person needs to be provided, wants to an extra area for the residential usage, then that person can use the TOD norms if that sites locates within the mass transit corridor system, so like metro, railway station, ISBT. The concept behind is that those person who are living nearby this transit corridors like metro stations or railway stations, they can easily commute to their workplaces and can easily come back. Okay, so I think everyone got an idea what this is about. And high density रखते हैं so that everything is within walkable distance. ठीक है, तो 400 800 मीटर के अंदर आपको सारे services, all type of land uses, mixed use में हमें मिल जाता है. That's why we have this concept TOD. Let's move on to the next. Let's move to the next question. Software digital technology. Okay, so इसमें से इस बार एक question आया था, but sometimes we have seen more questions also coming from this area. ठीक है, तो हम इस पे भी थोड़ा focus कर सकते हैं. Here the only question that came was SCADA टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होता है. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स. तो आपके पास सेक्टर दिए गए हैं, हीटिंग एंड कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, GIS, बट मेनली दिस सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, सप्लाई एंड सीवेज. ठीक है, तो फुल फॉर्म इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम. ठीक है,
तो ये सिस्टम हम नॉर्मली वाटर सप्लाई ड्रेनेज में यूज करते हैं. दिस इज समथिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और जीआईएस से रिलेटेड नहीं है. यू शुड नो दिस. आपको अगर सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर इनके एरियाज के सॉफ्टवेयर पता है तो आप यू वुड बी श्योर कि यहाँ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का नहीं है और इसका नहीं है. तो यू वुड ओनली हैव दीज टू. अगेन सेंट्रलाइज हीटिंग कूलिंग आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए. देन यू वुड बी एबल टू गेट टू वाटर सप्लाई. ठीक है, दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ जीके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार आरपीएससी में. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम. Which of the following is not an urban utility? So ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये अर्बन यूटिलिटी का मतलब अर्बन सर्विसेज या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे हैं हम इसको. ठीक है, या तो आप सर्विसेज बोलो या उसको या अर्बन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बेसिकली सीवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी आपकी यूटिलिटीज, बेसिक अम्यूनिटीज, आपको बेसिक प्रोविजन जो होता है. ठीक है, सर्विसेज में आता है. और एजुकेशन इज नॉट एन अर्बन यूटिलिटी. ठीक है, यूटिलिटी नॉट अ सर्विस. ठीक है, तो आपका एजुकेशन आ जाएगा. तो ये बेसिकली यू शुड नो कि अर्बन यूटिलिटी इज अ basically all the services and the physical infrastructure provided. Let's go to the next question. Area based development. I think we have done this question already. Let's move on. Which state has become the first state in the country to submit state annual action plan under AMRUT? So this is very important. It's Rajasthan. Okay, so this is very, very important because it's to do with Rajasthan. Okay, so I've already broken the ice. Okay, so the answer is Rajasthan here. You should remember this. Okay, now let's move to the next question. Which of the following cities has been nominated by India for recognition under the UNESCO's World Heritage List? So I think everyone would be aware that it's Ahmedabad here. Okay. One more thing to admit that they have not confused in this question. There is no city of Rajasthan in there. So you got lucky. Those who attempted this paper, they got lucky. They haven't given any city of Rajasthan to confuse. And Ahmedabad is the right answer. Ahmedabad is the right answer. Now next question is property tax is levied and collected by. Okay, so आप जो लोगों ने थोड़ा सा भी आइडिया जिनको टैक्स कहाँ पे होता है, कौन करता है, किसको करते हैं, नगर निगम हम जनरली बोलते हैं. So it's basically the urban or rural local body. So basically this property collection is done by the local body. ULB से होता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे भी हमें not the development authority or the state government or the office of the sub-registrar. So ये आपके options नहीं है. Local, urban local body is where, or the rural local body is where they collect tax, property tax. Now let's move to the next question. National Highway number 7 joins. Now ये थोड़ा सा question you can say कि थोड़ा सा tough है क्योंकि not everyone is aware कि कौन से highways क्या है, but we should be able, if you have time, you can go through the top like NH 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 तक आप एक बार देख सकते हो, because those mainly represent the major routes. Okay, so this is Varanasi with to Kanyakumari. ये हमारा NH 7 connect करता है. ये हमारा ऊपर से नीचे जाने वाला मतलब वो रूट है. ठीक है, takes you to Kanyakumari. यहाँ पे हमारा ये वाला repetition वाला factor काम नहीं कर रहा है, so you should in this case it is not really workable, but आप देख सकते हो. Okay, so this is the route NH7 का. And you can have a look at other NH के देख सकते हो एक बार if you have time. Sustainable SDGs are part of the Dash agenda for sustainable development. So ये you all have heard of this term SDG. They are evolved from the Conference of Parties, and you have heard of this term Agenda 2030. So sustainable development goals they have planned to achieve it by 2030, and they have given 17 goals. You need not to remember this. Just remember there are 17 goals under SDGs to be achieved by 2030. It is a common and get repeated in multiple competition exams repeated questions. Now, so SDGs are a successor to MDGs. So पहले जो 2015 का था, that was called as the Millennium Development Goal. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया गेट में and it may appear. इसको अगर घुमा के देंगे तो it would be that.
या कौन पहले किसका क्या ईयर था, तो MDGs के बाद SDGs फॉर 2030, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, इसका आंसर है 2030। Now name the country that has proposed to assist in developing Delhi as the first global smart city in India under the framework of the draft MOU presented on 27th April 15. तो श्रीलंका इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप चाइना, स्पेन, फ्रांस में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज का ही हमें सपोर्ट है। आई कैन नॉट हेल्प यू सिलेक्ट वन, बट हाँ यहाँ पे आप यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा देख सकते हो इफ दे टॉकिंग अबाउट असिस्टिंग या कुछ डेवलपमेंट में, बिकॉज मोस्टली वी आर गेटिंग दैट, यू नो, बाहर से हमारी इन्वेस्टमेंट यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा आती है। तो स्पेन एंड फ्रांस कुड बी एन ऑप्शन। यहाँ पे आपका आंसर स्पेन है। If you don't know the answer, आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, otherwise you can just, if you have some idea, you can attempt this. ठीक है, let's move on to the next question. Numericals. Now we have 6 numericals, and I think second. Sorry, there was some lag. Okay, so numericals are relatively easy. आप उसमें बस अगर क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो you'll be able to solve them. यहाँ पे see, the question has told a total of 16,000 people, so you have the population as 16,000, ठीक है। and इसको हमने डिवाइड करना है। they here again one more important term is plotted housing scheme में, तो आपको यहाँ पे plots दिए गए, ठीक है। and proportion कितना allocate हुआ है, 2:3:5, 2 is for HIG, 3 is for MIG और LIG के लिए 5। So whenever you have a ratio, हम normally उसको units में divide करते हैं, 2x, 3x, 5x. Okay, already you can see there, ठीक है। तो ये हम divide करते हैं, and 10x is the total number of units जिसमें हम divide करते हैं। तो यहाँ पे when you have population as 1600, तो हम easily इसको equate कर सकते हैं 1600 से, तो आपको x 1600 मिल जाएगा, sorry 16,000 से equate करेंगे 1600 मिलेगा। and sorry, I just forgot to add one more thing. यहाँ पे क्या करना है हमें, we have to see how many persons per dwelling unit and number of dwelling units per plot. So when we are doing plotted housing, तो हमें per plot कितने लोग हैं वो भी निकालना जरूरी है। So per plot here we have 10 people, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 dwelling units हैं, हर एक में 5-5 लोग हैं, तो 5 + 5 10 लोग होंगे टोटल एक प्लॉट के अंदर। So you also have to see that. तो हम यहाँ पे number of population को divide करने की जगह we will divide the number of the number of plots that we have come up with, जो कि हमारा 1600 है, ठीक है। 10 people per plot, so 1600 plots. So we need 1600 plots and we have to divide them within 10x से हम अगर equate करते हैं तो हमारा x 160 आता है, and since they have asked for number of HIG plots which is 2x, जो हमने assume किया था 2x, तो it will be 160 into 2, that is 320, ठीक है। तो आपको 320 is the answer यहाँ पे, ठीक है। I think this इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम रेशियो में डिवाइड करते हैं and then we are dividing की प्लॉट्स हर एक को कितने कितने मिलेंगे, ठीक है। It's very simple. Now let's move to the next question. A sector has a gross density of 200 persons per hectare. Okay, so हमारा gross density का फॉर्मूला होता है population, total population upon total area, ठीक है। तो and I'm just writing the definition so that ये आपको याद रहेगा, तो आप सारे questions इससे related कर पाओगे। Total population upon residential area, net density में नीचे residential area होता है, ठीक है। तो आप इसको P/A1 लिख लेते हो यहाँ पे, and this is P/A2, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है GD दिया है 200 एंड नेट डेंसिटी दिया है आपको 400 persons per hectare. एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है, दिस एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, द टोटल एरिया, तो आपका A1 है आपको गिवन, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ नॉन रेसिडेंशियल एरिया इज, इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको जनरल आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं वैसे करते हैं पहले इसको। तो GD हमें पता है 200
पॉपुलेशन नहीं पता है, A1 हमें पता है 120, सो इससे हमारा पॉपुलेशन निकल के आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन आ गया, पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, चाहे आप जीडी नेट डेंसिटी निकाल रहे हो क्रॉस डेंसिटी, तो सेम पॉपुलेशन यूज होगा वहाँ पे। तो हमारा नेट डेंसिटी, वी कैन जस्ट टेक दिस पॉपुलेशन, और नेट डेंसिटी भी हमें गिवन है 400, ठीक है, 400 गिवन है, तो हम इससे A2 निकाल सकते हैं, दिस इज द एरिया फॉर रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0, कैंसिल दिस आउट, आपको मिलता है 60 आउट ऑफ 60 हेक्टेयर आउट ऑफ 120 हेक्टेयर, मतलब अगर हाफ आपका रेजिडेंशियल है तो 50% आपका एरिया खाली होगा, नॉन रेजिडेंशियल विल आल्सो बी रिमेनिंग 50%, ठीक है। 50% अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है 60 और 120 अगर आपका रेजिडेंशियल है 50% है, तो नॉन रेजिडेंशियल भी 50% होगा, आंसर आ जाएगा। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप इसमें जीडी और एनडी के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हो कि ग्रॉस डेंसिटी इज बेसिकली हाफ ऑफ नेट डेंसिटी, अगर आप देख लो 200 है वो 400 है। So we can think of in a sorry to interrupt you, we can think of an area. Let's take a small pod. Let's take this is an area, and suppose on this area the home is constructed. This is the green area. So overall in the gross density this area will come, while in the net density this area will come. So while looking at the question, we can clearly think in the 2 persons per hectare and the density net density of 400 persons per hectare. In this, if we take a bigger area and we make like 400% 2 hectare area is living as per the gross density. As per the gross density, 400 persons is living in 2 hectare of area. So if we make the persons constant, we can directly see that 50% of the net density the net density gives you the residential area. So 50% is the residential area and 50% is the non-residential area. This is by chance in the question it is given like this. By otherwise you can calculate it in formula in this way. Okay, so I think you would have got the idea कि कैसे करना है इसको। Just give me 1 second. Okay, so I think you would have got the idea कि net area और gross area में क्या difference होता है, and then we can use the same formula and apply it for other questions as well. ठीक है, जैसे अभी आपका ये वाला question है, where the net area is given to you, net area of residential plots, और आपको of total area if the population is 1000, ratio of net density to gross density। तो हमसे आपसे क्या पूछ रही है, ND upon GD, और अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा where it was population upon residential area, जो कि मैंने A1 मान लेते हैं यहाँ पे, and population upon A2 which is the total area। तो आपको यहाँ पे ये assumption आपने जो देखा है यहाँ पे, ये आप PP तो कैंसिल हो जाएगा, तो your answer will be A2 by A1। इसमें से आपका अगर A2 is your total area which is x, तो आपका 0.4x आपका इससे अगर आप derive कर सकते हो, 0.4x will be your net area। So आप इससे x cancel and you will have 10 by 4 which is 5 by 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 5 by 2 आ जाएगा। People get confused in between 5:2 and 10:4. Usually ratio is always given in the minimal. So if you have this confusing option, you can take to the least factors in the whole numbers. Give in the standard form, जो हम least जो factors cancel out करके जो आता है आंसर, वही हम देते हैं आंसर में। और यहाँ पे confuse करने के लिए they have given you population, but actually for finding this area we don't really need this। यहाँ पे अगर आप population नहीं भी दिया होता तब भी you can tell that it is 5:2। Okay, so because it is A2 by A1, what your ratio is coming out to be। ठीक है, next question। shear force at free end of a cantilever। so अगर कोई cantilever beam है, okay, I think diagram सर बना रहे हैं, so आप उसमें देखो कभी भी free end होता है, उस free end में अगर कोई भी
रिएक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं अप्लाइड है, तो आपका उस केस में shear force 0 होता है. ठीक है. Now let's move to the next question. Let's move to the next question. ठीक है. A 6 meter long beam is fixed at its left end. सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. 6 meter long beam is at its fixed end. This beam is 6 meter and it's free at its right end. So this end it's free. If focus on the what is given in the question, and if a concentrated load of 25 kilonewton, this 25 kilonewton is acting at a distance of 4 meter, then they asking then the bending moment in kilonewton on the left end. In the exam, please don't confuse between the ends. Take as you draw. This is the left end. Okay, this is the left end. So from this, suppose we can take A as B. So what is moment? Moment is into force into distance. This is moment, bending moment. Okay, so in this case, bending moment is equal to 25 into 4. We'll take this distance and this force. From this end, it is asked. If it is asked from this end, from the right end, it becomes 25 into 2. Okay, so here it in this case, the answer is 100. Okay. I think everyone will be clear with this. Let's see. For other kind of beams also, you can just check what the where the bending moments are 0 and all those things have been given in this description. You can go through it. Okay, now a town has 16,000 dwelling units.